Good afternoon, everyone. Hope you all are doing well and taking great care of yourselves. In this video, we are going to discuss how to compute turnover in case of speculative F&O and delivery based transactions. Para 5.14 of revised guidance note on tax audit issued by ICAI deals with this issue. First of all, let's deal about what do we mean by speculative transaction. Speculative transaction means a transaction which is settled otherwise than by taking or giving the delivery. So normally when we buy and sell the goods, we take the delivery. When we sell the goods, we give the delivery. But in case of a speculative transaction, neither we take delivery nor we give delivery. Intraday transactions in the stock market are considered as a speculative transaction. So whatever gain or loss that we have is a called loss from a speculative business or gain from a speculative business. So intraday transaction, let's say I bought 100 shares of SBI at 440 today in the morning. Before the closure of the market today itself, I squared off my position by selling it off at 480. This is an intraday transaction, buy today, sell today. It is a speculative transaction. Whether I do this transaction on the floor of stock exchange or I do this transaction off market, it would be treated as a speculative transaction. In those transactions, so let's say I bought 100 shares of SBI at 440, squared it off today itself at 480, 100 of I cleared my positions. I squared off my position. Then 40 into 100, 4,000 rupees my gain, and that 4,000 being a positive difference, it would be my turnover. Let's also say I deal in the script of TCS today only. I bought 100 shares of TCS at 3,000. I squared off my position today only at 2,900. Here you can see I have made a loss. So 100 into 100, 10,000 rupees my loss. So today only, my end of the day, my position is I earned 4,000 from SBI. I lost 10,000 in TCS. So my profitability is negative 6,000, but my turnover is aggregate of positive and negative difference, that is 14,000 rupees. So intraday transaction will fall into this category. The question would arise, what whether F&O transaction would also fall? Friends, F&O transactions are also the transactions which are settled otherwise than by taking an actual delivery or giving the actual delivery. So ideally they are speculative in nature, but the exceptions given under section 43 of the Income Tax Act provide that if they are eligible transactions, meaning thereby they are executed on the floor of the stock exchange, digitally signed contract note is available, CTT is paid. In case of the commodity derivatives, yes, they would not be treated as speculative, though they are settled without taking or giving delivery. They will not be treated as speculative transaction and they would be treated as normal transaction. मतलब ये हुआ कि अगर मैंने टीसीएस का एक लॉट लिया और टीसीएस के एक लॉट में मैंने अपना पोजीशन क्लियर करा है, तो उसे स्पेक्युलेटिव बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अच्छा, मान लो ये ट्रांजैक्शन मैंने स्टॉक मार्केट पर ही करा है जिसके पास डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट है, तो स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाएगा। लेकिन यही ट्रांजैक्शन मान लो मैंने ऑफ मार्केट करा हुआ है, ये मैंने स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे नहीं करा हुआ है, बिना किसी ब्रोकर थ्रू नहीं करा हुआ है, इंडिया बुल्स, यू कैन से जीरोदा और यू कैन से आईसीआईसी डायरेक्ट, ये ब्रोकर से नहीं करा हुआ है, मैंने किसी ब्रोकर के साथ नहीं करा, तो ये फिर मेरा स्पेक्युलेटिव माना जाएगा। इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट शुड बी अवेलेबल, इन केस ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव सीटीटी शुड हैव बीन पेड। तो ये इफ दैट इज द केस दैट ऑफ कोर्स यू कैन से ये स्पेक्युलेटिव नहीं है, भले डिलीवरी आपने ली नहीं है या दी नहीं है, फिर भी उसे नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। तो ऐसे केसेस में फिर टर्नओवर कैसे गिनना है? पहले बात करते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की। तो यहां पर वंस अगेन गाइडेंस नोट कह रही है, पैरा 5.14 गाइडेंस नोट कह रही है, टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने एक लॉट खरीदा, यहाँ पर शेयर नहीं होते, यहाँ पे लॉट होता है। मान लो मैंने एक लॉट में अपनी पोजीशन बनाई, मैंने बाई की पोजीशन बनाई एक लॉट
एक रिलायंस का एक लॉट लिया, मान लो एक लॉट 100 शेयर का है और मैंने एक लॉट लिया 3,000 रुपए में। अब ये लॉट मैंने क्लियर कर दिया अपना पोजीशन, 10 दिनों के बाद मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मान लो 100 शेयर का एक लॉट जो मैंने 3,000 में लिया था पर शेयर, अब उसको मैंने क्लियर कर दिया 3200 रुपए में। तो 200 रुपए जो सरप्लस हुआ, 200 इंटू 100, दैट इज माई टर्नओवर एंड दैट इज माई गेन। यहाँ पर प्लीज ये चीज याद रखो, व्हाट वी नीड टू टेक टर्नओवर एज द डिफरेंस बिटवीन द टू डे, द डे ऑन विच आई took the position and the day on which I squared off the position. The day on which I took and the day on which I squared off the position. I took the position on the first day of the month. I squared off the position on the 10th day of the month. So the day on which I took the position, I took a long position. I bought for 3,000. I squared off at 3,200. So that 200 is my turnover multiplied by number of shares in a lot. अगर एक लॉट 100 शेयर का है तो 200 इंटू 100, अगर एक लॉट 500 शेयर का है तो 200 इंटू 500, दैट वुड बी माई टर्नओवर। ब्रोकर हर रोज बिल भेजेगा मार्क टू मार्जिन के सेटलमेंट का, तो हो सकता है 3,000 बीच में 3,300 हुआ है, फिर 3,100 हो गया, फिर 2,800 हुआ, फिर 3,500 हुआ, तो ये मार्क टू मार्जिन का है, उसे टर्नओवर नहीं गिनना है, वो डिफरेंसेस को टर्नओवर नहीं गिनना है। केवल 2 तारीख, जिस तारीख को पोजीशन बनाया और जिस तारीख को स्क्वायर ऑफ किया, उसी को आपको टर्नओवर बनना है, उसी को आपको टर्नओवर मानना है, और उसी वही डिफरेंस या तो आपका गेन होगा या लॉस होगा। अगर आपका गेन है या लॉस है, दोनों को जोड़ दो, साइन इग्नोर करो, यानी पॉजिटिव डिफरेंस एज वेल एज नेगेटिव डिफरेंस। रिलायंस के लॉट में मुझे 10,000 रुपए मिले और टीसीएस के लॉट में 3,000 गए, तो 13,000 टर्नओवर होगा, जैसे हम इंट्राडे में गिन रहे थे, बिल्कुल ऐसे। ये आपका हो गया टर्नओवर इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में भी हम तो वही करते हैं, मैंने कॉल ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन दे दिया, सेल कर दिया, पोजीशन स्क्वायर्ड ऑफ करी है, तब तो डिफरेंस ही लेना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन विल दैट आल्सो बी ट्रीटेड एज टर्नओवर? Minded, the ICAI guidance note on tax audit has now made a little change here. They say that premium received on sale of option is also to be included as turnover. However, where the premium received is included in determining net profit for transactions, the same should not be separately included. इसका मतलब ये हुआ, I'll give you an example to understand this. Let us straight away go to the example to have a better clarity on this. This is the example in front of your screen. Let's say there is a script called X. The transaction type is call option. Lot size 5,000. Purchase value 4 lakh. Value premium received on sale, that is 5 lakh. So basically, if we look at here, I bought one lot of call option of 5,000 shares of X, rupees 80, and sold 100 call option. I bought the call option at 80 and sold it at 100. So 80 into 5,000, you can say 80 into 5,000, that is 4 lakh, and sold it, I received the premium 5 lakh. So I have squared it off. When I have squared it off, the 1 lakh rupees I have squared it off, so 1 lakh I gain, that is going to be treated as my turnover. If we look at the 2014 guidance note, they say that you have to take a difference of 1 lakh as well as the sale value, that also the turnover is 6 lakhs. If we look at the old guidance note, now in the new guidance note, they have said no, the turnover is going to be only 1 lakh because you have squared it off. नीचे देखते हैं पुट ऑप्शन 5,000, परचेज वैल्यू मेरा होगा 2.5 लाख, सेल 225, 2.5 लाख कैसे आया? यहां पर देखिए, one lot of put option, lot size 5,000, share of Y for 50 and sold for 45. तो मैंने 50 रुपए में प्रीमियम खरीदा पुट ऑप्शन का, 5,000 का लॉट था और 45 में बेच दिया। सो 5,000 इंटू 5 जो लॉस हुआ मेरा, यहां पर आप देख सकते हैं 25,000 रुपए, तो 25,000 ही मेरा टर्नओवर माना जाएगा और लॉस मेरा 25,000 होगा। अगर पुराना है, देखिए पुराना गाइडेंस नोट तो बोल रहे थे 25,000 का डिफरेंस तो लो ही लो, you received a premium on sale 225, तो 2.5 लाख रुपए आपका टर्नओवर माना जाएगा। ये उन्होंने पुराने गाइडेंस नोट में कहा। अब नए गाइडेंस नोट में कहा है आपका टर्नओवर केवल 25,000 ही माना जाएगा। अच्छा, अब लेते हैं मान लो तीसरा सिचुएशन,
तीसरा सिचुएशन ये है कि आई सोल्ड वन लॉट ऑफ कॉल ऑप्शन, लॉट साइज 5000 शेयर ऑफ जेड फॉर 60 एंड मैंने स्क्वायर ऑफ करा नहीं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे 60 पर 5000, तो 3 लाख रुपए का मेरा एक्सपोजर हुआ, मैंने स्क्वायर ऑफ तो करा नहीं है। एंड तो अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं करा है, in that case your turnover would be the entire premium received on those options, so the 3 lakh is going to be your premium। तो ये नए पुराने दोनों में ये सेम है। तो अगर ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, आई वंस अगेन टेक यू टू द स्क्रीन, हियर यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल। नीचे आते हैं तो पुराने गाइडेंस नोट के हिसाब से मेरा टर्नओवर बन रहा था 11,25,000, सॉरी 11,50,000 रुपए। नए के हिसाब से मेरा टर्नओवर बन रहा है 4,25,000 रुपए। ये मेजर चेंज इस गाइडेंस नोट में हुआ है so far as computation of turnover in case of option transactions are concerned. I hope this transaction would be of some help to my viewers. Now, which transaction would fall under this category, F&O category? Delivery based transaction or which transaction, not delivery based, I'm sorry. Which transactions would fall under this category? The currency, stock and commodity future and option transactions are going to fall. Currency का transaction भी यहीं पर fall होगा, और ये currency transaction fall होगा, ये कहा है दिल्ली ITAT ने 26/5/2022 के अपने जजमेंट में जो दिया गया इन द केस ऑफ विनय प्रकाश HUF वर्सेस ACIT। इस केस में उन्होंने ये चीज कही हुई है। अब बात करते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन। बड़ा सिंपल चीज है। डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में क्या होगा? डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में आप शेयर्स बेच रहे हैं, डिलीवरी आप दे रहे हैं, वट एवर मनी दैट यू आर रिसीविंग दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज योर turnover. It's very simple, nothing much. So the delivery based transaction of purchase and sale of the shares undertaken by the assessee are in the course of business will fall under this category. अगर आपका business है to deal in the share, then it would fall under this category. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्लैरिटी, डिविडेंड इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, भले आपका शेयर में डील करना आपका बिजनेस है, फिर भी डिविडेंड इनकम जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही माना जाएगा। Friends, I assume that this video would be of some help to you. I would try coming up with such kind of smaller videos for the benefit of everyone. If you wish me to prepare a video on any other subject or any other topic, please do let me know. It would be a pleasure putting such smaller videos on the YouTube. Please do like, share and subscribe to the channel, and your suggestions are of great importance to me. Please do provide your valuable suggestions. Thank you very much. Wishing you all a great time. Thank you very much.